Good morning, students. Welcome back to Chemistry Classroom once again. I hope all of you watched the last video. Today, I will start from types of chemical reactions. So, look at the book. This portion not easy, so be careful about it. Among the different types of chemical reactions, normally combinations, decomposition, displacement, double displacement, and neutralization reactions are one of we commonly come across. So, normally chemical reaction are 5 types. These are कॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ सिर्फ जोड़ना, डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन होना, डिस्प्लेसमेंट अपना प्लेस को रीअरेंज करना, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो रिएक्टेंट अपना प्लेस रिप्लेस कर रहा है, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन are ones we commonly come across. So let's start with combination reaction. नाम से ही पता चलेगा नॉर्मली रिएक्शन क्या है. Combination reaction. In a combination reaction, two or more reactant add up to form a product. मतलब in which chemical reaction normally two or more than reactants mix up with each other to form a product. So here is a single product is formed. Some examples are given below. The burning of some elements. Elements like hydrogen, carbon, sulfur, phosphorus, calcium, and magnesium, on being burned in air, form their oxides by direct combination. So look at the example first. हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे नॉर्मली फॉर्म क्या होगा, वाटर. So here is a two reactant combined together to form a single product. That's why it is known as combination reaction. So combination reaction means here is a two or more than reactant combined together to form a single product. So इसकी नीचे अंडरलाइन करना. Normally hydrogen, carbon, sulfur, phosphorus, calcium and magnesium. These kind of substances when burned in air, they form their oxides. Here is another example. Carbon plus oxygen फॉर्म क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. सेम है सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड. कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो लुक एट द एग्जांपल. हियर इज अ टू रिएक्टेंट बट प्रोडक्ट इज सिंगल. द बर्निंग ऑफ कार्बन burns some charcoal in a deflagrating spoon. Burn on charcoal in a deflagrating spoon. Deflagrating spoon का मतलब क्या है, नॉर्मली जिस स्पून में नॉर्मली हम कुछ चीज को जला सकते हैं और वो पिघलेगी नहीं. Introduce the spoon into an open gas jar near the mouth of the jar so that the burning charcoal gets a clear supply of air. तो नॉर्मली हम लोग चारकोल को कैसे जलाएंगे, लुक एट द हियर. हियर इज अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून मतलब ऊपर से हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, ग्लास जार के अंदर घुसा के हम लोग चारकोल को बर्न कर रहे हैं और ऐसे ही जार में मतलब सिर्फ मुंह में घुसाएंगे. नॉर्मली ये चारकोल वाटर का ऑक्सीजन का कांटेक्ट में रह सके. क्लोज द माउथ ऑफ द जार विथ अ लीड व्हेन ऑल द कार्बन हैज बर्न्ड. मतलब नॉर्मली जब कार्बन पूरा जल जाएगा उसके बाद हम लोग ये बिकार में एक तो लीड लगा देंगे. Invert the jar and place it into a trough containing clear lime water and open its mouth inside the liquid. The lime water rises in the jar and becomes milky. अगर उसके अंदर हम लोग बिकार को अगर ऐसे उल्टा के हम लोग एक तो लाइम वाटर में घुसा देंगे तो हमारे लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा. लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की और दिस प्रूव्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. तो नॉर्मली इन दिस रिएक्शन इज प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. मतलब एक बिकार में अगर हम लोग डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में चारकोल को जलाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे नॉर्मली ये चारकोल वाटर का कांटेक्ट ऑक्सीजन का कांटेक्ट में रह सके. चारकोल पूरा जल जाने के बाद हम लोग एक तो लीड लगा देंगे. लीड लगाने के बाद उसको उल्टा के एक तो लाइम वाटर का बिकार में घुसा देंगे. नॉर्मली लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की. दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. Now, the burning of magnesium. Magnesium, when ignited in air, say in an open gas jar, burns with a dazzling white flame.
मतलब मैग्नीशियम को अगर हम लोग टू ग्लास जार में घुसा के भी जलाएंगे अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, तो नॉर्मली इट स्टार्ट विथ burn with the dazzling white flame. The magnesium oxide form deposed as a white smoky solid on the walls of the jar. तो नॉर्मली मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा ये डिपोजिट होगा ग्लास जार में ऐसे स्मोकी सॉलिड में. नाउ रास्टिंग, very important portion. A piece of iron, when left in moist air, slowly gets a crust of brown red solid called rust. अगर नॉर्मली हम लोग आयरन पीस को मॉइस्ट एयर में ऐसे खुला छोड़ देंगे, थोड़ी दिन बाद देखेंगे उसके ऊपर ब्राउन रेड सॉलिड कलर का एक ठो पार्टिकल्स मतलब सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द रास्ट. रास्ट इज अ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, is the product of direct combination of iron with the oxygen and moisture of the air. So look at the example. Here is iron plus oxygen plus moisture. Form क्या हो रहा है? Rust, that is brownish red substance that is known as iron oxide. So what is rust? When we expose any iron particles in the moist air for more than 3-4 days, after that we will see a brown red solid upon it, that is known as rust. Rust is a hydrated iron oxide. Hydrated मतलब iron oxide के अंदर पानी है, that is it's known as hydrated iron oxide. It is the product of the direct combination of iron plus oxygen plus moisture. So here is a 3 reactant but product is single, that is iron oxide and NH2, that is rust. So this portion you will learn carefully with chemical reaction. X can vary, मतलब ये vary भी हो सकता है, मतलब इसकी जगह पे X की जगह पे हम लोग 3, 5, 7, 10 ऐसे नंबर बिठा सकते हैं. That's why this number is not definite. The combination of elements with chlorine. Chlorine is a very active non-metal. Chlorine is a very active non-metal. A greenish yellow gas. So color भी याद करना for fill in the blanks. Chlorine is a greenish yellow gas. Most metals and some non-metals combine with chlorine to form their chlorides. So basically some non-metals and mostly metals, chlorine react with metals basically, and other than some non-metals react with chlorine to form their chloride. So look at this example, you will learn only one. Like sodium plus chlorine, form क्या करेगा? Sodium chloride, NaCl. Here is iron plus chlorine, form क्या हो रहा है? Iron chloride, FeCl3. Next hydrogen plus chlorine, form क्या हो रहा है? Where is ignite, मतलब जलाना पड़ेगा. Hydrogen chloride. सेम वे फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, फॉर्म क्या हो रहा है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. फॉर व्हाट पेंटा? बिकॉज Cl5, that's why it is a pentachloride. So here are some example, and students you will learn only one. So basically you will learn the color of chlorine, that is a greenish yellow gas, and react with basically metals and some non-metals added with or combined to form their chlorides. The combination of iron with sulfur. You have already learned that iron combines with sulfur when heated. मतलब हम लोग जब हीट देंगे तब जाके आयरन कंबाइन होगा सल्फर के साथ to form iron sulfide. So look at this chemical reaction, iron plus sulfur. Here is the heat act as a catalyst. अगर heat नहीं देगी तो normally chemical reaction नहीं होगा. So heat is mandatory. When we heated iron with sulfur, it is formed iron sulfide. Color is must. आयरन का कलर क्या है? ग्रे, और सल्फर का येलो. तो आयरन सल्फाइड जो फॉर्म होगा उसका कलर क्या होगा? ग्रेइश ब्लैक, मतलब लुक एट इट इज ब्लैक इन कलर. आयरन सल्फाइड. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स विथ वाटर. The oxide of non-metal generally dissolves in water to form an acid. This is very important part. The oxide
of non-metal generally dissolve in water to form an acid. मतलब नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, अगर हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे दे फॉर्म एसिड. लुक एट द एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म क्या हो रहा है, कार्बोनिक एसिड. सेम वे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म क्या हो रहा है, सल्फर सल्फ्यूरस एसिड. H2SO3 that is it is known as sulfurous acid. अगर H2SO4 होता तो उसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब नॉर्मली नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर में हम लोग डिसॉल्व करेंगे दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एसिड. हियर इज टू एग्जांपल, you will learn only one. Now, and oxides of many metals combine with water to form hydroxide. तो नॉर्मली मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड. सो नॉन मेटल का ऑक्साइड को अगर हम लोग, ये ध्यान में रखना, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है उसको अगर हम लोग पानी में डुबाएंगे तो दे फॉर्म एसिड. सेम वे अगर मेटल का ऑक्साइड को हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे दे फॉर्म बेस, मतलब खार, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा. लाइक सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O फॉर्म क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेम वे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O फॉर्म क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. So it is the basic difference from non-metals and metals. मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी में डुबाएंगे दैट इज फॉर्म हाइड्रोक्साइड, आई मीन बेस फॉर्म कर रहा है. whereas नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे दे फॉर्म एसिड. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. When carbon dioxide is passed through water for some time, the water turns blue, litmus, wine red. सो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड. उस वाटर अगर ब्लू लिटमस को पकड़ाएंगे तो दैट इज टर्निंग टू रेड, शोइंग दैट इट कंटेन्स एन एसिड. बिकॉज इट प्रूव दैट नॉन मेटल ऑक्साइड अगर पानी में घुलाएंगे दे फॉर्म एसिड. बिकॉज एसिड टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इन रेड, ब्लू को रेड कर देता है, दैट इज एसिड. सेम वे अगर रेड को ब्लू कर दे दैट इज एल्कली और बेस. एट द सेम टाइम लाइम वाटर व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, अगर क्विक लाइम को अगर वाटर के साथ घुला देंगे दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मतलब मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने के बाद दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड टर्न्स लेट लिटमस टू ब्लू. उसको अगर पकड़ाएंगे लिटमस पेपर तो रेड को ब्लू कर देगा. दस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक. Remember that acidic substances turn blue litmus red and basic substances turn red litmus blue. This portion is very important for your short question. So इस portion को बहुत अच्छे से पढ़ना. Because acid turn the blue litmus red and basic substances turn red litmus blue. So student, I hope all of you understood what I have discussed today. So for today, up to this portion.